Hello everyone. So guys, as you all know that in the last month I started and I took one initiative that I'll be helping out the life sciences domain students who are just pursuing their graduation or post graduation and who are in dilemma which career path or which field to pursue in their to make their uh, career very fruitful and to get a direction in their career. So with the objective to help such students. Today I have a very special guest with me, Megha. So she has been a role model in my life as well, and she has achieved a lot in her life. So let's hear out and try to gain more insights from the trajectory of her career, whatever she has achieved in her career so far. So hello, Megha. Hello, hi Loveen. Nice to How? connect with you. Yeah, same here. How are you, Megha? I'm doing good, Loveen. Yeah. What Uh, about? Yeah, good. I am doing fantastic as well. So, Megha, could you tell our audience more about yourself, about your academic background, and about Mhm. your current role in your company and Mhm. all? Okay. So I did BTech in biotechnology. With me, I always get a question. So were you from biology background? So I tell them I was from a pure mathematics background. I didn't have the biology background. So what happened? I had a full choice, like electronics, electrical, computer science. But somewhere it was not clicking me. And it happened that there was option of biomedical and biotechnology. So I talked to my family members, friends, teachers, and they told me that this is something a new area, an upcoming one. So I think you should take it. So I thought of why not taking it up. So I did not choose the traditional one. My dad told that you're going to a tradition, you're not going to a traditional branches, so there will be no government jobs for you. So I told I'm okay with that. I think I want to go in something uh, where I can find my passion. I don't want to go where the crowd is going. So that's how the journey in biotechnology started. Then I did BTech from NIT Raipur, and there was, of course, no jobs for biotechnology. Only one option was there: either you do GATE, get a tag of IIT. So that's the mentality we are, we have grown with. So I prepared for GATE. Of course, there was only correspondence course. So I did that. I got All India 11 rank, and then Okay. I got into IIT Kharagpur. After going into IIT Kharagpur, I realized the job scenario is same. Again, there is no job for biotech. You have to go for PhD. I went for PhD IIT Bombay. I did PhD, I did research, but during the research, I faced few hurdles. Like I was not enjoying what I was doing. I found that research was not my passion. Although I loved my domain, but that was not something I wanted to do. I wanted to have something in the intersection of business and technology. So Okay. I did my PhD, and after that, I was exploring my options. And I somehow got to know about Gravy from a friend. And I looked at the website and Right. I read the case studies. And I had a gut feeling like something very interesting is there. I should apply over there. And that's how I landed up in Gravy, and that's how Okay. I landed in the intellectual property domain, the domain which I was very unaware of. Okay. That's really very impressive and काफी मतलब अगर मैं आपकी पूरी बात को देखूं लाइक फ्रॉम बीटेक ये जो डिलेमा आपने फेस किया आई बिलीव आई आल्सो फेस द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीटेक और मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर स्टिल फेसिंग मतलब अभी उसका लाइक आई गेस यू डिड योर बीटेक इन 2015 or somewhere around that Uh, time and I completed, yeah, 2012. okay, 2012. So it's been more than 10 years, more than a decade. I did my BTech, I completed my BTech in 2019. So like अगर आप Mhm. एक पाथ देख अगर आप एक पूरा कॉमन नोट देखेंगे ना तो यू विल फाइंड दैट कि लास्ट 10 to 15 ईयर से वही पाथ चला आ रहा है लाइक आपको भी Mm. वही सेम प्रॉब्लम थी मेरे को भी सेम प्रॉब्लम थी और आई बिलीव अभी जो लोग बीटेक बायोटेक में कर रहे हैं या फिर किसी भी लाइफ साइंसेज डोमेन में कर रहे हैं उनको सेम Mm. प्रॉब्लम होती है
सो मेगा लाइक कुड यू टेल मी कि पीएचडी करने के बाद लाइक फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल आई वांट टू नो कि जो हमारी ऑडियंस है लाइक जितना हम्म मैंने सुना है कि आईपीआर बहुत नीश डोमेन है लाइक आई एम आल्सो वर्किंग इफ आई टेल यू हम्म मेरे कॉलेज में लाइक एमटेक अगर मैं आपको एमटेक का बताऊं आउट ऑफ 30 ओनली आई एम द ओनली वन हु इज परसुइंग करियर इन द हम्म आईपी डोमेन अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बस 3 या 4 लोग हैं जो आईपी में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं सो ये हम्म अभी बहुत नीश फील्ड है सो कुड यू टेल मोर अबाउट दिस फील्ड इन अ लेमन लैंग्वेज लेमन टर्म्स सो दैट यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कनेक्ट टू इट Definitely, love it. So, if I tell you till my PhD, I had a very vague knowledge of IPR. मुझे सिर्फ दो ही चीज पता थी पेटेंट डोमेन के बारे में, क्योंकि आई वाज इन रिसर्च फील्ड. पेटेंट डोमेन यानी पेटेंट फाइलिंग ड्राफ्टिंग ये काम है. ओके एंड क्योंकि मैंने आईआईटी खड़गपुर में वो किया, तो देयर वाज अ कोर्स लाइक which is related to the legal aspect of patent. वो तो मुझे राजीव लगता था या गांधी तो सिर्फ कॉलेज आई गेस राजीव गांधी कॉलेज करके एक है 3 इयर्स का यस. कोर्स है 3 इयर्स का हाँ कोर्स है हाँ, यस यस. तो वो मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि यार बायोटेक वाले ना वो भी कोर्स करते हैं, या कि देयर इज अ गुड चांस ऑफ दिस लॉ एंड ऑल. तो अगेन मुझे ये लॉ वाली चीज भी पसंद नहीं थी, तो मेरे कंसेप्शन में ना ये दो ही चीज थी. ओके बट व्हेन आई लैंडेड इन ग्रेबी, I came to know like this is an untapped area we are just unaware of. अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ आईपीआर क्या है, अगर आप अपने डोमेन की टेक्नोलॉजी को फॉलो करोगे ना, तो आपको 10 या 20 साल पहले ही पता चल जाता कि यार सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाली है टेस्ला की. आपको प्रोडक्ट लॉन्च होने का वेट ही नहीं करना पड़ता. आपको ये भी नहीं वेट करना पड़ता कि यार देयर इज अ फ्यूचर ऑफ स्मार्ट वॉच. द वॉच यू आर वेयरिंग राइट नाउ is going to be outdated in next 20 years. So this is what patent field is. आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, दैट यू कम टू नो. और जब आपको वो पता चलता है ना, यू कैन बी एन इनोवेशन कंसल्टेंट इन योर. ग्रेट So that was the new insight I got after entering to. So it was a myth breaker to me कि पेटेंट एनालिस्ट का काम पेटेंट ड्राफ्ट करना नहीं है. पेटेंट एनालिस्ट का काम पेटेंट जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व करना नहीं है. देयर इज यू नो variety of, and it's a whole domain in its own. This is what I want to tell about I. ग्रेट सो मेगा लाइक कैन यू टेल मी लाइक यू नो अगर लाइक एक माइंड में ये परसेप्शन रहता है कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आप कोर आरएनडी में ही यू ट्राई टू फिगर आउट समथिंग इन कोर आरएनडी और यू ट्राई टू फिगर Mm-hmm. यू ट्राई टू गेट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स परसुइंग पोस्ट डॉक फ्रॉम अब्रॉड सो लाइक वो Mm-hmm. थॉट्स आपके जब लाइक यू वर परसुइंग योर पीएचडी ये सारे थॉट्स से आप बाहर कैसे निकले या फिर ये सारे थॉट्स आते थे तो हाउ डिड यू पिक अप Definitely, सच थॉट्स definitely. So I would say Laveen कि ये ना पूरा पूरा एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है काम. देयर आर पीपल हु ट्राई टू सॉल्व अ रिसर्च प्रॉब्लम, दे स्पेंड 10-15 years doing it. What happened during my PhD, when I was doing in the last 2 years of my PhD, my daughter was born. I realized being a mother, I have to multitask. There is no choice. अगर मैं if my work requires that I have to be in lab, I have to do the experiment, and there is no option of flexibility, maybe अभी नहीं तो बाद में I'm going to leave it. ये मेरा पहला trigger point था. I wanted something where I'm using my skills, but at the time I'm supporting my family also. एक ये trigger point था. दूसरा, I was not enjoying that, एक ठहराव नहीं होता, एक ही रिसर्च किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे. And I realized my mind is creative. I need I need that change. So ये दो ट्रिगर पॉइंट्स थे. और आई हैड एन पोस्ट डॉक ऑप्शन हॉस्टल ओके जस्ट आफ्टर माय पीएचडी. आई हैड एन ऑफर, बट वो होता है ना कि दिल माना ही नहीं कि अगेन मैं उसी चीज में एंटर करूँ, वो उसी अनसर्टेनिटी में एंटर करूँ. आई रियलाइज कि फिर से पोस्ट डॉक करने जाऊंगी, अगेन आई जगल विथ टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर. उसके बाद क्या, अगेन मैं जॉब ढूंढूंगी. ठीक है, आई थिंक इतनी पढ़ाई हो गई है, इट्स द राइट टाइम टू यूज माई स्किल. एंड जिसे बोलते हैं ना, आई एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि मुझे कहाँ जाना है, बट आई न्यू मुझे कहाँ नहीं जाना है. ओके सो दैट हेल्प मी फाइंड माई वे.
ग्रेट, पीपल ग्रेट। से कि यार यूटी हॉस्टल का ऑफर ऐसे ही तेरे हाथ में है ना, व्हाई डू यू वांट टू? सो आई रियलाइज कि दिस टाइम आई वांट टू लिसन, लाइक आई वांट टू टेक अ वेरी thoughtful decision, ओके, and I took a chance to enter green. It was an experiment for me, ओके। to try out different things. And this experiment of yours, finally succeeded, and the way you are, Mm, achieving and you are doing wonders in your field is just mind blowing. So Megha, why what I just got from your messages, कई बार ऐसा होता है कि वी आर स्टक कि यार क्या करें क्या ना करें, तो वो जो क्लैरिटी नहीं mm, मिलती ना। सो जितना मेरे mm, को समझ में आया आपकी बातों से वो ये है कि कई बार हम रिवर्स डायरेक्शन में चल सकते हैं कि यार ये चीज नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल exactly. अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो लाइक आई वाज वेरी क्लियर कि ठीक है मेरे को सेल्स प्रोफाइल में नहीं जाना। ठीक है, देन आई Mm, डिसाइडेड mm, कि पीएचडी मुझसे नहीं होगी, पीएचडी इज नॉट माय कप ऑफ टी, research is not mm, my cup of tea. So I decided like कि market research or consulting sort of job या patent consulting sort of job would be a better option. So a message to the all the audience who are viewing, who are watching this video कि at times अगर सीधा track नहीं मिलता, so you can try a way, like there is always a way around to think from cross out different, things. yeah, to cross out things. Cross out things, Yeah, yes. great. So Megha, like another question, like my next question would be like पेटेंट लाइक पेटेंट एनालिस्ट बनने के लिए अगर लाइक कोई बंदा है जो Mm-hmm, बीटेक थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, एंड mm-hmm, उसने ही डिसाइड कर लिया लाइक ही इज नॉट गेटिंग एनी किक एनी फैसिनेशन इन द कोर लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट्स। सो mm-hmm, लाइक वो एक तो हम एज अ एनालिस्ट या एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं जिससे कि अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि ये अभी भी बहुत नीच mm-hmm, फील्ड है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड की कौन से ये आईपी या पेटेंट कंसल्टिंग फील्ड किन लोगों के लिए बना है, लाइक हु विल बी द आइडियल फिट, क्योंकि कई बार ये mm-hmm, डिसाइड करना बहुत बहुत टफ हो जाता है कि यार क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, क्या सेल्स मेरे लिए है, mm-hmm, क्या पेटेंट कंसल्टिंग मेरे लिए है। तो एक तो वो mm-hmm, अवेयरनेस वाला क्वेश्चन, सेकंड ये वाला क्वेश्चन कि ये कैसे डिसाइड करें कि यार मैं आइडियल फिट हो सकता हूँ उस इंडस्ट्री के लिए। mm-hmm. सो आई वुड से कि अवेयरनेस के लिए, मेरे लिए अवेयरनेस एक लाइफ साइंस कम्युनिटी पे आई वुड फील कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक माइंड सेट है कि यार सिर्फ रिसर्च ही है। दूसरा माइंड सेट है कि यार स्कोप बहुत ही कम है, सबसे बेकार ब्रांच होती है। तो आई वुड से कि जितने भी लोग एक्सेल कर रहे हैं ना अपने अपनी फील्ड में, एंड आई वुड से दिस सिर्फ आईपीआर डोमेन नहीं है, देयर इज अ रेगुलेटरी डोमेन, देयर आर पीपल डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। So there are different, if you are excelling it now, like we are doing a chit chat, awareness. This is a way you can, create awareness. Now coming to the second question was, Like how can a person decide, like a graduate, like a person who is pursuing mhm, बीटेक, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि यार मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ और ये फील्ड मेरे लिए एक आइडियल होगा। वो okay. आईपी इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकता है कोई, और वो अब खुद को कैसे जज कर सकता है कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बना है या नहीं बना। So पहली चीज तो आपको यहाँ पेटेंट ड्राफ्टिंग नहीं करनी। हाउ एनीबडी कैन डिसाइड कि उसके लिए पेटेंट कंसल्टिंग है? अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, अगर वो क्रिएटिवली थिंक कर सकता है, अगर वो इन्वेस्टिगेटिव सर्च कर सकता है, अगर वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है, इफ इफ पर्सन इज एबल टू डू दैट, और वो भी अपने डोमेन नॉलेज के साथ, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। If a person loves reading about new innovations, क्या नया हो रहा है इस डोमेन में, अगर वो एक क्यूरियोसिटी है ना, तो आई वुड से कि इस डोमेन इज फॉर दैट। ओके। है, लेकिन थोड़ा सा डोमेन से जो मोहब्बत है ना वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे आई एम इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, सो दिस बायोटेक connects me to dairy industry, this biotech connects me to agriculture industry, pharmaceutical company, medical device company. So the first thing is you should love your subject. ओके। एक अपना स्किल डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एंड आई एम श्योर दैट अंडरस्टैंडिंग विल टेक यू टू प्लेसेस। So Megha, like just our concluding remarks or my concluding question to you would be like अगर मैं ये देखूं कि लास्ट डिकेड में लाइक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए। फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो जियो ने पूरा 360 डिग्री टर्न अराउंड कर दिया मार्केट, और हम्म, वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जियो का लॉन्च होना।
सो अभी जैसे लाइक वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्टर रेट, एंड अभी एआई भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आई वुड आस्क कि अगर मैं आईपी के फील्ड की बात करूं, ठीक है, लाइक देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि एआई बहुत सारी जॉब्स ले लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब आई वुड लाइक माय क्वेश्चन टू यू इज कि हाँ, ये जो हम लाइक ये जो अभी लोग हैं, लाइक जो द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल परसुइंग देयर ग्रेजुएशन, तो हम्म उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आने वाले 5 से 10 सालों में आईपी इंडस्ट्री कैसी होगी, कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम्म। ओवरऑल एज अ करियर पाथ ये आईपी इंडस्ट्री कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। So, Laveen, the IP industry right now is in a very, I would say, niche area as compared to other domains. There is a lot of potential of growth. अगर मैं दूर भी ना जाऊँ, सिर्फ ग्रेवी का ही एग्जांपल ले लूँ, जो 2.5 years ही हुए यहाँ है, आई हैव सीन ये जो कंपनी की साइज है ना, डबल से ट्रिपल हुई है जब से व्हेन आई ज्वाइन। एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर दैट ग्रोथ हो रही है। और वो भी तब हुई रिसेशन के समय, जब आप बहुत न्यूज़पेपर में सुन रहे हो कि यार गूगल फायर कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फायर कर रहा है, मेरी कंपनी तो हायर की जा रही है। सो दैट वाज अ रीअश्योरेंस की आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग टू स्टे। एआई का अपना रोल है, बट एआई इज गोइंग टू असिस्ट ओनली आईपीआर फील्ड। ऐसा नहीं होगा वो जॉब्स खा जाएगी, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ तो करियर ग्रोथ वाइज तो बहुत ही देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। if you look at my case, I joined as a RA and within 2.5 years I was promoted to team lead. So जो skills के साथ आप आते हो ना इस इंडस्ट्री में, so there is a need where people have domain expertise, domain knowledge. So definitely the IPR field is worth trying. Okay. Megha, just just a addition, add on to your answer. Like मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया, Hmm. like in the tenure of 2.5 years, you have seen the journey from a starting from a research analyst to team lead, and I guess आपके अंडर 5 से 6 लोग होंगे, रिसर्च एनालिस्ट होंगे। So like what advice you would like to give to our audience who are watching our video कि मतलब हम अपने हार्ट लाइक आपने 3 साल में या 2.5 साल में ऐसा क्या किया, ठीक है, जिससे Hmm. आपने ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी अपने करियर में। Hmm. सो आई वुड से कि जो पहले 1 या 2 महीने होते हैं ना, इंसान एक्सप्लोर कर रहा होता है कि क्या मुझे चीजें अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती। फिर जब आप काम समझ जाते हो ना, देन यू डोंट वर्क फॉर योर कंपनी, यू डोंट वर्क फॉर योर मैनेजर, यू एक्चुअली वर्क फॉर योर सेल्फ। और जो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए काम कर रहे हो, राइट। सो आज भी मैं यही बोलती हूँ, आई डोंट वर्क फॉर माई कंपनी, आई वर्क बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है वो काम। और मैं कभी भी ना कोई प्रोजेक्ट इसलिए नहीं की कि लाओ यार टास्क मिला है खत्म कर। सो दैट थॉट प्रोसेस हैज रियली हेल्प मी ग्रो। कि अगर जो मेरे स्किल सेट है पीएचडी के, आई ट्राई टू कनेक्ट डॉट्स, आई ट्राई टू फाइंड द स्टोरी बिहाइंड इट, आई ट्राई टू गिव गुड रिकमेंडेशंस टू माय क्लाइंट। सो दैट रियली हेल्प मी कि। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, डोमेन चेंज होता रहेगा। कभी आप एग्रीटेक के लिए काम कर रहे हो, कभी आप ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रहे हो, कभी आप फूड डोमेन के साथ काम कर रहे हो। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट विल टेक यू टू प्लेसेस। ग्रेट। सो दिस हेल्प्ड मी ग्रो। ओके। तो काम को लेके पैशन, और दूसरी चीज कुछ नया करने का जो एक मुझे वो मिलता है ना हर 2 महीने, मुझे आई नो कि मुझे कुछ नए डोमेन के बारे में पता चलेगा, कुछ नहीं। सो दैट kindles the curiosity and love for my work. ग्रेट ग्रेट। दैट्स रियली गुड टू नो। सो अगर देखें कि लाइक अगर हम मोटा मोटा एक साल की बात करें, सो यू Mm. आर वर्किंग ऑन 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, और लेट्स से 6 to 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो Yes, yes. जैसे पीएचडी में होता है कि हम एक ही फील्ड में रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, Yes. तो Yeah. यहाँ पर ऐसा है कि आप एक साल के अंदर 6 से 10 अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हो।
So which is which keeps one updated with the recent advancements that is going in the healthcare or life sciences domain. Yeah. Yeah, And whatever efforts you are putting, whatever research you are doing, आपने उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन देखते हैं क्योंकि आपके पास रियल लाइफ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स आ रही है इंडस्ट्री से। तो आप ना सिर्फ कोई फैंसी रिसर्च नहीं कर रहे, यू आर एक्चुअली सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम जो कि कभी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में जाके अप्लाई होने वाली है। सो यू आर कंसल्टिंग लाइक IP councils, big R&D heads, innovation. You are also helping companies for innovation scouting. So this is something very interesting that one cannot get if you are stuck in, if you're doing research in academics. So that was my neck. It will depend from person to person. absolutely, Vega. Like at the end, like we can only suggest someone, or we can just share our journey, share our experience, whatever we have Yeah. gone through. ठीक है, लेकिन ultimately a person decides his own career based on his based on his peers Mm. or his seniors guidance. So Megha, it was a great session and a very interactive session, and it was my honor having a word with you, communicating and Thank you, interacting with Lavin. you. Same here. you know It's uh, great talking. I believe after watching this video, many of the students who are still pursuing their bachelor's degree or master's degree or even PhD, just like you did, they will get a clarity. They will get a vision that there is कि कभी कोई एंड नहीं होता, लाइक कई बार लोग स्टक हो जाते हैं कि यार पीएचडी कर ली, अब तो पता नहीं मैं कॉर्पोरेट में एंटर कर Mm. पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट यू आर अ लाइव एग्जांपल कि कि Mm. पीएचडी करने के बाद भी यू कैन अचीव एक्सपोनेंशियल अचीव Mm. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर करियर। और इवन अगर आप Yeah. बीटेक के, आई हैव सीन इन ग्रेवी की just the BTech graduates, they are doing exceptionally well. So there is Mm. uh, like sky is the those who have the passion, those who have the curiosity, and for them sky is the limit, I would just say. Mm. I forgot to mention one thing, Lavi. कि ना एक चीज और है जो ग्रोथ पे हेल्प किया, वो डेफिनेटली PhD थी। तो कुछ स्किल्स ना बहुत एविडेंटली नहीं दिखती है, जैसे कि Okay. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ट्राइंग टू कंपेयर गुड बैड। तो जो एक एनालिटिक स्किल्स है ना, डेफिनेटली दैट केम फ्रॉम PhD। Okay. तो दैट वाज द बेस डेफिनेटली। Okay. सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी लर्निंग जो हम, या फिर कोई भी टाइम जो हम हम्म। डिवोट करते हैं अपने एकेडमिक्स में, वो वो वेस्ट नहीं होता। आप कभी भी नहीं, इट उसे कम्स अराउंड, इट्स कम्स अराउंड। इट ऑलवेज कम्स अराउंड। ओके। The communication skills, that was also, coming from PhD. ओके। लाइक इफ आई सी, आप जैसे अपने प्रोफेसर से बात करते होगे, दैट हेल्प्ड यू इन ड्यूरिंग क्लाइंट कॉल्स, और मे बी So इंटरेक्टिंग we विद योर मैनेजर्स और we go for conferences, we go या। for presentations, so we do interact with so many people। और पूरी टेक्निकल बात होती है, ठीक है। हम्म। इतनी ज्यादा टेक्निकल होती है कि नाउ इफ आई गो फॉर क्लाइंट कॉल्स, एटलीस्ट जो एक इम्प्रॉम्प्टू आंसर होता है ना टेक्निकल क्वेश्चन, ना एटलीस्ट यू कैन थिंक। ओके। और फिर ऐसा भी होता है ना कि कभी आपको जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डोमेन में इतने नए आते हैं कि एटलीस्ट नाउ यू हैव कि यार मैं पढ़ के ना समझ सकता हूँ ये चीज। कुछ हम्म। नहीं, 2 दिन अगर इफ आई इन्वेस्टेड, एटलीस्ट मैं इसके टर्म्स और वो तो मैं समझ ही सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आता है। टोटली एग्री। So Mega, let's wrap this session up, and I would just like to thank you again for giving and devoting time for this session. Really happy, I'm really glad to have you on this bridge and to interact with you. Same Thank you, here. So Mega. I wish the audience a very good luck. I hope our interaction was Yeah, definitely, definitely. I too believe that our audience will get the most out of this, and in future also I'll try to to bring the more brilliant minds to this platform. Like my next video is aligned with 2 to 3 persons in Gravy itself, who are doing really well in their career. So it's my vision to bring them on this platform, and to just have a word with them, so that as a society or as a
whole life science ecosystem we can help our juniors and peers out. That's a very good initiative. Okay, Okay, see you. Bye bye. bye. Thank you. Bye.